Alleging the country is afflicted by the problems like inflation and corruption, Deputy Leader of Opposition Ravi Shankar Prasad on Saturday stated that the country is asking answers to all these problems from top Congress leaders Sonia Gandhi, Rahul Gandhi and Prime Minister Manmohan Singh. The BJP leader also alleged that Congress leadership has no answer for all these problems. Prasad was addressing a press conference in Ahmedabad. He also said the BJP is fighting the 16th Lok Sabha elections on defined issues of development, unemployment, corruption, inflation and internal security. ये चुनाव हम बहुत ही डिफाइंड मुद्दों पर लड़ रहे हैं। देश के विकास के अभाव, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और देश के असुरक्षा का भाव। The agenda of 2014 election as per the BJP is very clear. Inflation, unemployment, stinking corruption, lack of growth and a very powerful sense of insecurity which has afflicted India. देश इन सवालों का जवाब सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह से मांगता है। उनके पास कोई उत्तर नहीं है। Prasad also claimed that there is a profound wave across the country in favor of BJP in general and its prime ministerial candidate Narendra Bhai Modi in particular. It was also clear from day before yesterday's polling in 91 constituencies of the country, he said. मित्रों, देश भर में भाजपा के पक्ष में और श्री नरेंद्र भाई मोदी के पक्ष में एक अभूतपूर्व हवा चल रही है और कल जो 91 जगह पर वोटिंग हुई, कल मैं काशी में स्वयं था, वहां मेरा कार्यक्रम लगा हुआ था, तो हर जगह बीजेपी के पक्ष में एक बहुत ही अभूतपूर्व माहौल है। There is a profound wave in favor of the BJP in general and Shri Narendra Bhai Modi in particular. नरेंद्र भाई मोदी को एक आशा के रूप में देश के लोग देख रहे हैं। This report was brought to you by NNIS.